about our generation is that we are more concerned about our environment. Have you ever felt that deep guilt while using plastic, wood, and other non-eco-friendly products? But we continue to live in that guilt because of lack of availability of eco-friendly options. And even if eco-friendly options are available, that are very expensive. So we have come up with an eco-friendly product which is environmental friendly as well as pocket friendly. Introducing Natrani, plantable recycled paper pencils, which is made out of old newspapers. वही न्यूज़पेपर जो हमारे घर में ऑलमोस्ट डेली आता है, जिसे हम कलेक्ट करके रद्दी वाले को दे देते हैं या फेंक देते हैं. Newspapers are made up of paper, and paper are made by cutting down trees. More than 4 lakh trees are cut down in just 1 year for making pencils. Directly or indirectly, we all are responsible for the process of deforestation. वहीं दूसरी तरफ इंडिया में हर साल 4 लाख से भी ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं सिर्फ पेंसिल्स बनाने के लिए. You must all be wondering how a pencil can be made out of used paper. So let me walk you through the manufacturing process of Natrani pencil. न्यूज़पेपर्स इकट्ठे किए जाते हैं, उसके बाद न्यूज़पेपर्स कटिंग को जाते हैं. कटिंग होने के बाद ग्रेफाइट को ग्लू करके पेंसिल्स को रोल किया जाता है. रोल की हुई पेंसिल्स सूखने को जाती हैं और सूखने के बाद पेंसिल्स कटिंग के लिए जाती हैं. कट होने के बाद फिनिशिंग को जाते हैं और फिनिश्ड प्रोडक्ट निकल आता है. फिनिश्ड प्रोडक्ट के एज पे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से सील करके सीड डाल दिया जाता है और इस तरह से ये अमेजिंग इको फ्रेंडली पेंसिल्स तैयार हो जाती हैं. लेट्स सी हाउ दिस इको फ्रेंडली पेंसिल वर्क्स. Once you feel like discarding the pencil, take a look at the seeds attached to the end of the pencil. Plant it diagonally inside a pot. Show some love and care, and after a few days, you will see the reward of your efforts. When you will sharpen this pencil, you will see rainbow colors coming out. And trust me, you will enjoy its sharpening experience. Ditch the wooden pencils and switch to eco-friendly pencils.